बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वर्चुअल कैंपस की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ का 29वां लेक्चर है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर फादमनीर अब्बासी हूँ। स्टार्ट करेंगे विद द लेआउट ऑफ दिस लेक्चर। इनिशियली विल गो थ्रू द हाइलाइट्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हमने की, किन कॉन्सेप्ट्स का अहाता किया, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमने सीखी, ज़रा ब्रीफली उनको गो थ्रू करेंगे। देन इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द जनरलाइज्ड कॉटेव फ्लो। आज के लेक्चर में जनरलाइज्ड कॉटेव फ्लो डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली आज का लेक्चर हैवीली डिपेंड्स अपॉन व्हाट एवर वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर की कैलकुलेशंस और उनको लेके आज एक्सटेंड करेंगे। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि आप जो दो केसेस हमने उस लेक्चर में डिस्कस किए थे उनको कंबाइन करें, उनको कंबाइन करके खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें बिफोर वी गो फॉर इट, बिफोर आई हियर इन दिस लेक्चर गो फॉर इट। तो होपफुली या चलें, लेट मी बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आप लोगों ने इसको किया होगा। नहीं भी किया तो चलें, देयर इज़ नथिंग टू बी डन, क्योंकि आज तो हम उसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। बट नेसेसरीली ज़रूरी क्या था उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बार बार आपको कहना कि आप थोड़ा सा ये देख लेते कि किन चीज़ों की वजह से या बाउंड्री की वजह से एंड प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कहाँ पे चेंजेस आ रहे थे। ज़रा आप खुद से इसको कैलकुलेट करके देखते तो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन वेरी मच ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड what is going on and what difference it makes when there is a change in the pressure gradient or in the boundary. Well, and at the end of this lecture I'll summarize whatever we did in today's lecture. Now previously we studied about say few concepts which were studied at the start of this course but were used in previous lecture. तो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी किया जिसमें फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो से रिलेटेड चीज़ें थी, जहाँ पे हमने 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो फील्ड्स को स्टडी किया। वेलोसिटी फील्ड देखी कि किस किस्म की वेलोसिटी फील्ड होगी तो फ्लो 1 डायमेंशनल होगा और किस किस्म की वेलोसिटी फील्ड के लिए फ्लो 2 एंड 3 डायमेंशनल होगा। Further, the Navier-Stokes equation, we saw the types and the form of the Navier-Stokes equation for the compressible, for the incompressible fluids with constant viscosity. Also, the momentum equation or the generalized momentum equation, both for the Newtonian and non-Newtonian fluids in the scalar form, scalar components के form के अंदर momentum equation को भी हमने एनालाइज किया था एंड जस्ट देखा था कि किस तरह क्या फॉर्म होगी मोमेंटम इक्वेशन की एंड देन क्या फॉर्म होगी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की इन द कंपोनेंट फॉर्म। देन उन चीज़ों को यूज़ करके वी स्टडीड द लैमिनर फ्लो बिटवीन टू वाइड पैरेलल प्लेट्स। दो केसेस हमने इसके अंदर स्टडी किए थे। वन वाज द प्लेन कॉटे फ्लो एंड द अदर वन वाज द प्लेन पॉजियोली फ्लो। नाउ प्लेन कॉटे एंड प्लेन पॉजियोली फ्लो क्या चीज़ है और किस तरह हम लेके चले थे, बजाय इसके कि उसको अभी रिकॉल करें और दोबारा से मैं उसको गो थ्रू करूं इस लेक्चर के स्टार्ट में, अगेन विल गो थ्रू दैट इन डिटेल, क्योंकि आज के लेक्चर इज़ ऑब्वियसली थर्ड केस ऑफ रिलेटेड टू दैट। हमने दो केसेस पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, तीसरा केस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अल्टीमेटली आई हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ इट very briefly again. So let's start. Today we are going with a generalized Cotte flow. What we discussed, firstly the governing equation, the reduced equation of motion, and that too obviously from previous lecture. is जो गवर्निंग इक्वेशन हमने रिड्यूस की थी, मॉडिफाई की थी, that was of the form d square u by dy square is equal to 1 by mu dp by dx. Chunki it is a separate lecture, so name this as equation 1.
अब दिस वाज द रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम इक्वेशन और द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से हमने रिड्यूस की थी, मेकिंग यूज ऑफ द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लो के मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक हमने यूटिलाइज किए थे. थोड़ा सा ब्रीफली उसको रिकॉल करते चलें. पहले नंबर पे वो यूज द फैक्ट दैट द फ्लो इज अनस्टेडी, द फ्लो इज स्टेडी, आई बेग योर पार्डन हियर. फ्लो स्टेडी था, सो इसलिए तमाम टाइम डेरिवेटिव्स वैनिश कर गए. सेकेंडली वी अज्यूम दैट द फ्लो इज ओनली इन द एक्स डायरेक्शन, सो द ओनली नॉन जीरो component of velocity will be the x component of the velocity. Further, there is no flow in the z direction, so u is not function of z, and the continuity equation gave us that the u is not a function of x also. So we were left with only one option, that the u is a function of only the transverse coordinate or the y component or the y coordinate. So हमने partial derivative of u को in terms of total derivative write up कर लिया. अच्छा, उसके बाद the y and z components of the Navier-Stokes equation gave us that the pressure is not function of y and z. So हमने total derivative of pressure को write up किया, replacing the partial derivative of that, and ultimately the x component of momentum equation for Newtonian fluid gave us this equation 1. इस इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया था दो सेपरेट केसेस के लिए इन द प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो दो अलग अलग केसेस डिस्कस किए. रिकॉल दैट केस 1 वाज केस 1 फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर. पिछले लेक्चर का अगर केस 1 रिवाइज करें तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था फॉर dp by dx equal to 0 or p was assumed to be equal to constant. जब p was constant तो dp by dx was equal to 0. तो in order to get the fluid in motion, or in order to get the non-trivial solution of the differential equation, we assume that the upper plate is in motion. Upper plate is in motion, or the boundary conditions were u is equal to 0 at y is equal to 0 and u is equal to capital U at y is equal to b. ये बाउंड्री कंडीशंस हमने यूज करके अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर जीरो प्रेशर ग्रेडियंट, एंड वी ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन व्हिच वाज ऑब्वियसली ऑफ द फॉर्म लाइक दिस. u was equal to capital U or B into y, a linear velocity profile. Do take a look that whether I have written it correctly or not. मैंने इसको ठीक भी लिखा है या नहीं previous lecture से जरा इसको compare कर दें. This was the solution making use of these boundary conditions into the differential equation. Now again दोबारा u is directly and linearly proportional to y here, and from case 2 of the previous lecture, प्रीवियस लेक्चर का केस 2 अगर देखें हमने क्या चीज डिस्कस की थी, उसमें वी अज्यूम दैट देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट dp by dx is equal to a constant. So जब dp by dx was equal to a constant, there was no need
क्योंकि हमें ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं था मिल रहा है इस केस में, तो इट वाज नॉट नेसेसरी कि हम बाउंड्रीज को मूव ही कराएं, और बाउंड्रीज शुड बी इन मोशन to set the fluid in motion. So we assume that the boundary conditions were of the form u is equal to 0 at y is equal to plus minus p. y is equal to plus minus b पे दोनों बाउंड्रीज पे velocity was assumed to be equal to 0. Now this was what we did. These were the two cases which we discussed in the previous lecture. अब एक तीसरा केस था जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के एंड पे भी आपसे ये डिस्कस किया था कि आप दोनों केसेस को, केस 1 और केस 2 को कंबाइन करके अगर इसको देखें, यानी कि अगर इसको फिजिकल टर्म्स के अंदर कहें तो इट वाज लाइक दैट कि आप इसको सॉल्व करें फॉर नॉन जीरो प्रेशर ग्रेडियंट और अ कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट विद मूविंग बाउंड्रीज विद वन ऑफ द बाउंड्री सेट इन मोशन. तो थोड़ा सा बाउंड्री कंडीशन के अंदर चेंज एंड गवर्निंग इक्वेशन के अंदर चेंज आना था. एंड आई टोल्ड यू कि अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखेंगे तो इट विल बी, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल कम टू नो कि बाउंड्री कंडीशन की वजह से चेंज कहाँ पे आ रहा है एंड गवर्निंग इक्वेशंस और नॉन जीरो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से चेंज कहाँ पे अकर कर रहा है. सो ताकि आप थोड़ा सा मॉडलिंग से और मॉडलिंग के आउटकम से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं. अगर इस स्टेज के ऊपर आप इन चीज़ों का लिंक डेवलप कर लें तो होपफुली दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग रिसर्च which you will be doing in your future. Now अगर आपने कर लिया, that's very good. Compare it what I'm going to do with what you have done, and if you haven't done it so far, then take a close look at this. Now case 3. That is P varies linearly in or opposite to the direction of motion. जो प्रेशर है वो लीनियरली वेरी कर रहा है या आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. Direction of motion of fluid, that is dP by dx is equal to constant, pressure gradient is constant. Further, and the upper plate is in motion with a velocity capital U. तो जो दोनों केसेस हमने केस 1 और केस 2 स्टडी किए, एक में अपर प्लेट वाज इन मोशन एंड दूसरे में द प्रेशर ग्रेडियंट वाज कांस्टेंट. अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम करें तो फिर किस तरीके से होगा. इन दिस केस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज से इंडिपेंडेंट ऑफ अगेन द z एंड द x कंपोनेंट, क्योंकि हमने जो इक्वेशंस डिराइव की वो तो उसी पैटर्न के ऊपर की, उसके ऊपर इस असम्पशन का कोई ताल्लुक नहीं. बट इट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द प्लेट, जो प्लेट्स की मोशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा एंड द प्रेशर ग्रेडियंट उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. नाउ फॉर कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट फॉर constant pressure gradient, integration of equation 1 yields
integration of 1 yields. ये जो गवर्निंग इक्वेशन हमने इक्वेशन 1 लिखी है, ये जो इक्वेशन है जो हमने रिड्यूस्ड फॉर्म ऑब्टेन की थी फ्रॉम द नेवी-स्टोक्स इक्वेशन, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें फॉर कांस्टेंट dp by dx तो विल गेट अगेन, ये वो सॉल्यूशन है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर चुके हैं इससे पहले. तो u इज इक्वल टू से 1/2 mu dp by dx y square plus ay plus b. Name this as equation 2. अगर हमने इक्वेशन 2 किसी और को नाम नहीं दिया, okay, that's fine. So this is our equation 2 here. This is our equation 2 where a and b are constants, और ये constants हम determine करेंगे making use of the boundary conditions which we are provided to us, and the boundary conditions are now देखें, जो चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि ये ज़रूर आप थोड़ा सा इस चीज़ को एनालाइज करें कि नॉन ज़ीरो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कहाँ पे फ़र्क पड़ेगा एंड मूविंग बाउंड्रीज की वजह से कहाँ पे फ़र्क पड़ा. देखिए, नॉन ज़ीरो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से वेलोसिटी फील्ड के ऊपर असर पड़ा थ्रू द गवर्निंग इक्वेशन के अंदर, बिकॉज इट वाज से नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वहाँ से इसके ऊपर फ़र्क पड़ा. नाउ मूविंग बाउंड्री की वजह से द इन्फ्लुएंस विल बी इन द boundary conditions or in this A and B. Take a look at this. Since lower plate is at rest and upper plate is moving with a constant velocity, so we have u is equal to 0 for y is equal to 0 and u is equal to capital U, a constant velocity, for y is equal to b. Name this as equation 3. This is y equal to b पे और upper plate पे there is a uniform velocity at equal to capital U and lower plate is at rest. Now making use of 3 in 2 gives, इन दो बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके इन a एंड b की वैल्यू जो है हमने डिटरमिन करनी है, एंड कंप्यूटिंग दिस वैल्यूज ऑफ a एंड b थ्रू दिस बाउंड्री कंडीशन 3 वी गेट दैट b इज इक्वल टू 0 say equation 4 and a is equal to u over b minus b by b over 2 mu dp by dx. Make use of these values and also verify that कि ये और A and B की यही वैल्यू आया सर्वाइव करती हैं या there is any mistake in the calculation. I leave it up to you to verify. A और B की ये दो वैल्यूज हमें मिली through these equations 2 and 3. अब इन दो वैल्यूज को वापस अगर सब्स्टिट्यूट करें into equation 2, what we will get? Substituting values of A and B from 4 and 5 into 2. 4 and 5 into equation 2. We simply get that u is equal to
1 by 2 mu dp by dx y square plus y over capital U over B, what say, capital U over B minus B over 2 mu minus B over 2 mu dp by dx here, and since b is equal to 0, so only this term will be able to survive. Further, अगर इसको थोड़ा सा rearrange करें, so we'll simply get that uy over b minus b over 2 mu dp by dx y over b into 1 minus y over b here. So this is what we get through this equation. This is our velocity profile which we obtained. जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इसको कंप्यूट किया है, कंपेयर दिस कि आया ये रिजल्ट जो वेलोसिटी फील्ड के लिए हमने कंपेयर किया है या कंप्यूट किया है, आया ये इस तरह ठीक भी है या इट इज़ नॉट इन द प्रिसाइज मैनर, या इसके अंदर मज़ीद कोई तब्दीली या चेंज की. सो लाइक स्टार्ट अगेन फ्रॉम प्रीवियसली, इस लाइन से दोबारा स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन राइट अप किए. सो for those students who have computed this and solved this equation, they should check it whether this equation is, or this format is true for it, or there is a difference between anything, कोई फ़र्क है या इन दोनों के अंदर. ये चीज़ ज़रूर आप वेरीफाई करेंगे जो फॉर्मेट लिखा वेलोसिटी का, आया इट इज़ करेक्ट और देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन योर कैलकुलेशन एंड माइन. एंड इफ़ इट इज़, तो ऑब्वियसली आपने ठीक लिखा होगा, आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी, अनलेस अनटिल आप इसको ठीक से वेरीफाई करें. खैर, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस. देखें फर्क क्या पड़ा. द कांस्टेंट वेलोसिटी वाज u of the boundary, that was capital U, which is appearing here, and the zero pressure gradient is here, plus y and b, its ratio is given here. अब थोड़ा सा चीज़ों को टर्म बाय टर्म एनालिसिस करते जाएं. पहले ये कि अगर तो कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 0 और द वॉल इज एट रेस्ट, तो दिस टर्म विल वैनिश फ्रॉम हेयर, ये टर्म 0 हो जाएगी एंड यू विल सिंपली गेट दिस थिंग, द सेकंड टर्म विल सर्वाइव ओनली. अब करना यह है कि आप इसको 0 रख के कंप्यूट करें एंड चेक करें कि आइदर दिस गिव्स अस द सॉल्यूशन ऑफ द केस 2 ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, आया ये रिड्यूस हो जाता है इनटू द रिजल्ट्स ऑफ केस 2, पहली चीज. दूसरी ये, अगर dp by dx is equal to 0, तो then what will be the format of this solution? अगर dp by dx is equal to 0, तो फिर ये second term will be equal to 0 and only first term will survive, which is obviously, clearly you can see that this is the solution for the case 1 of the previous lecture. Previous lecture के case 1 के अंदर हमने यही results, यही deductions find out की थी for a 0 pressure gradient, and when pressure gradient will be 0 in equation 6, we'll get the solution of the case 1 of previous lecture. Now equation 6 can be investigated based upon the value and the direction of the pressure gradient. For example, this equation can be investigated from different aspects. That is, from the value and direction of pressure gradient
एक एस्पेक्ट ये है कि हम इसको प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन और वैल्यू के साथ एनालाइज करें. फॉर एग्जांपल, when dp by dx is equal to 0. When dp by dx is equal to 0, we have u is equal to capital U over b into y. That is the velocity distribution is a straight line केस 1. केस 1 के अंदर भी हमारी यही डिडक्शन थी एंड केस 1 की डिडक्शन हमने रिट्रीव कर ली अपनी इक्वेशन 6 से और केस 3 और द मोर जनरलाइज्ड इक्वेशन से. नाउ फॉर dp by dx less than 0, अगर dp by dx is less than 0, then the pressure will be the pressure gradient is negative or favorable pressure gradient. If dp by dx is negative or the pressure gradient is favorable pressure gradient, then what will be the consequences of this type of pressure gradient on the velocity field? Take a close look at this. A velocity distribution is positive across the entire cross section. And in this case, the direction of the favorable pressure gradient is the same as that of the plate velocity. इसका मतलब है कि प्लेट वेलोसिटी की एंड प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी. नाउ फॉर dp by dx is greater than 0, then the pressure gradient is positive or an adverse pressure gradient.
or when dp by dx is greater than 0, then the pressure gradient is positive, or there is we can say that there is an adverse pressure gradient and its direction is opposite to that of velocity. Velocity of plate. In this case, the velocity distribution is either be all positive or a combination of positive and negative terms. Distributions. इस केस में या तो वेलोसिटी तमाम पॉजिटिव होगी या इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स. देखें ये किस तरीके से है. टेक अ लुक एट दिस. इफ दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी then there is one thing, and if this dp by dx is negative, then this whole u will change its behavior. So this u heavily depends upon the sign and the value of this dp by dx appearing in equation 6. Okay, let's start. The positive value of the pressure gradient that separates these two kinds of velocity distribution is known as the critical pressure. Is known as the critical pressure gradient. It can be evaluated at y is equal to 0 and after differentiating the velocity field. Given through equation 6. That is, अगर आप equation 6 को differentiate करें with respect to y, du by dy
is equal to capital U or B minus B or over 2 mu dP by dx plus 1 by mu dP by dx into a y, or du by dy at y is equal to 0 or at the center, or at say at y equal to 0, we simply get that, or at the lower plate, we simply get that u over b minus b over 2 mu dP by dx is equal to 0, or simply dP by dx with a subscript c, or the critical pressure gradient, is equal to dP by dx is equal to 2 mu capital U over B. This is an important thing, so you should box it and name it as equation 7. Now this equation 7 tells us the value of the critical pressure gradient, or the value below and above which the value of the velocity changes its sign. Now for adverse pressure gradient, dP by dx, or the critical pressure gradient, is greater than or equal to dP by dx, which is greater than 0. The velocity distribution will always be positive across the entire cross section. However, for say dP by dx greater than critical pressure, the case will be different. Part of the velocity distribution will be positive and part of it will be negative, and opposite to the direction of plate velocity. The type of flow
given by 6 is known as the type of flow given by 6 is known as the generalized Couette flow. This type of flow given by equation 6 is known as the generalized Couette flow, and it is the combination of the case 1 and case 2 of the previous lecture. प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो केस 1 और केस 2 हमने सेपरेटली डिस्कस किए थे, दैट इज केस 1 के अंदर जैसा कि हमने जीरो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो कंसिडर किया था और कांस्टेंट प्रेशर कंसिडर किया था, एंड फॉर दैट वी जस्ट consider the moving boundaries, the movable boundaries in which the upper boundary was in motion, उसको consider किया था, and in case 2 we considered the non-zero pressure gradient और the constant pressure gradient, उसको use करके with static boundaries हमने deal किया था, and case 3 के अंदर हमने दोनों को combine किया, that is we were dealing with the non-zero pressure gradient as well as upper plate was set in motion. तो इस किस्म के फ्लो को जनरलाइज्ड Couette फ्लो कहा जाता है, एंड इसकी वेलोसिटी फील्ड कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से इसका सोल्यूशन ऑब्टेन किया, इट इज गिवन टू यू हियर इन दिस लेक्चर. ज़रूरी क्या चीज़ है, अगर आपको एग्जाम में या जनरली इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो यू विल स्टार्ट विद द नेवी-स्टोक्स इक्वेशन. नेवी-स्टोक्स इक्वेशन को राइट डाउन करें, देन राइट इट डाउन दैट इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस we won't be writing that down, and for steady state flow the derivatives of pressure will be equal to 0. Now since the flow is only in the x direction, so the y and z components of the velocity will vanish and all their derivatives will vanish too. So reduce the governing Navier-Stokes equation and then solve them according to the given boundary conditions, then analyze the velocity distribution or the solution for the velocity distribution in a more refined manner and term by term analysis करें. Further अगर आप मज़ीद इसको pursue करना चाहें तो you can carry out that the point of maximum velocity, you can find out the point of maximum velocity as you can find out the point of maximum velocity, and in the same manner as we did in the previous lecture. Now compute du by dy and put it equal to 0. Cases here from equation 6 we have du by dy is equal to capital U over B minus B over 2 mu dp by dx plus 1 over mu dp by dx into y is equal to 0. First derivative को equal to 0 put करें, and obviously in the similar fashion as we calculate the maxima we will pursue with that, and you will simply get that y is equal to b over 2 minus mu u over 2 dp by dx. Now this is, name this as equation star. Now अगर इसको आप गौर से देखें तो this is the value at which, ये वो value है y की जिस पे velocity will be maximum. Now take a look at this. This is b by 2 or the half of the channel width. दो प्लेट्स के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है that was called as b, and b by 2, so half of that width. But सेंटर से थोड़ा सा हटाया इसको किस चीज ने, दिस मूवमेंट ऑफ द प्लेट ने एंड दिस प्रेशर ग्रेडियंट ने. सो ऑल ऑफ दीज टू विल एक्ट अपॉन दिस.
Now this equation static indicates that the maximum velocity for favorable pressure gradient occurs in the upper half of the cross section. Okay, and for adverse pressure gradient, it occurs in the lower part. यानी जब favorable pressure gradient है तो maximum value of the velocity will occur in the upper part, upper half of the cross section, and for adverse pressure gradient the maximum value of velocity will take place in the lower part of the cross section. Now substituting this value, अगर आप ये जो value of y की है for the maximum value of velocity आप substitute करें into our original equation or the solution equation 6, substituting static in 6, we get u is equal to u max, which is equal to u over b or 2 minus mu u over b dp by dx minus b square over 2 mu dp by dx 1 by b or 2 minus mu u over b dp by dx into the value of y again, which is 1 minus 1 over b by 2 minus mu by 2 u minus mu by b, here it is mu by minus mu by b u over dp by dx. So obviously a complicated sort of an expression, and name this as equation, say, double star. Now take a look at this, that the location of the velocity is shifting again, and the maximum value of the velocity is also shifting with the location. Ye maximum value of the velocity through this expression, you can see that it depends upon the capital U, or the velocity with which the wall is moving, the pressure gradient, or the dp by dx, jitna pressure gradient, either it's favorable or inverse pressure gradient or adverse pressure gradient. ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है value of the maximum velocity depend कर रही है. Likewise, the location of the maximum velocity, y की वो value जहाँ पे maximum velocity occur करेगी, ये भी depend कर रही है upon the maximum or the velocity of the wall and the pressure gradient. अब
अगर ये कहा जाए, ये पूछ लिया जाए कि किस कंडीशन के तहत, किस क्राइटेरिया के तहत द maximum value of velocity will occur at the center of the channel, तो you can simply say that अगर आप इस equation star को देखें तो by substituting u is equal to 0 और capital U, I'm talking about this capital U which is appearing here, अगर इसको आप 0 put करें then maximum value of the velocity occurs at y is equal to b by 2 which is at the center of the channel. So you can compute that as well. Further अगर आप थोड़ा सा मजीद देखें तो this dp by dx is also influencing the point at which the maximum velocity will occur. So this dp by dx, when it increases, this whole part decreases, and again with increase of dp by dx the maximum value tends to shift towards the center of the channel here. Now you know this maximum velocity again it is a function of capital U and dp by dx, so it changes with these two quantities as well. Also एक और चीज़ इक्वेशन 6 में हमें पता चल गया कि हमने वेलोसिटी फील्ड हमारी किस किस्म की है, और हमने उस वेलोसिटी फील्ड को लेके मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स और एनालिसिस भी किए अभी जैसा कि आपने देखा. फर्दर चूँकि वेलोसिटी फील्ड इज़ नोन टू अस, तो अब वेलोसिटी फील्ड को यूज़ करके हम मुख्तलिफ और काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं. टेक फॉर इंस्टेंस द फ्लो रेट can be computed making use of equation 6. इस इक्वेशन 6 को यूज करते हुए जो कि विच इज आवर वेलोसिटी प्रोफाइल, लेट मी शो यू इट वेयर इट वाज. या ये जो हमारी ओरिजिनल वेलोसिटी प्रोफाइल जो हमने फाइंड आउट की, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर जनरलाइज्ड क्वार्टर फ्लो, इसको यूज करते हुए हम मजीद चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हमें स्ट्रीम फंक्शन फाइंड आउट करना हो एंड वी हैव टू फाइंड द फ्लो रेट एज वेल और द vorticity और द स्ट्रेसेस, तो हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं मेकिंग यूज ऑफ इक्वेशन 6. टेक अ लुक एट दिस. फ्लो रेट, फॉर फ्लो रेट दिस इज इक्वल टू q 0 to b u dy. You can calculate the flow rate making use of this relation. Simply with respect to y integrate करें from 0 to b, or that is from this part totally integrate करें throughout this cross section and this u को, तो हमें जितना fluid is flowing through this cross section we will get that. So we can calculate that making use of this. Further the average velocity can also be calculated. For example, average velocity is given as q over total cross section. This is average velocity. This is the ratio of the flow rate over the area through which it is flowing. So this can be calculated making use of this relation. Further we also can calculate the stresses, and stresses can be calculated, and the shear stresses can be calculated. Tau yx is equal to mu du by dy. You can calculate the stresses at the wall for y equal to 0. अगर y equal to 0 put करेंगे तो you will get the stress at the lower wall, and if you put y equal to b you will get the stress at the upper wall. Likewise you can calculate the vorticity as well. So my point here is that making use of this velocity component, this velocity profile, this velocity distribution which we have calculated
in equation 6 for the generalized Couette flow, we can calculate several other things as well. And take for instance flow rate की मिसाल मैंने आपको दी, average velocity की मिसाल दी, likewise stresses और stream function psi which is equal to partial u by partial y. So likewise vorticity calculate कर सकते हैं making use of these components. So if the velocity field is known to us once, एक दफ़ा हमें velocity field के बारे में पता चल जाए तो we can calculate several other allied things like the stream function, like the stresses, the shear stresses, the average velocity, the flow rate, the vorticity. ये सारी चीज़ें हम calculate कर सकते हैं making use of this this velocity field. So we can calculate the stresses and other quantities making use of the velocity field which we have calculated in equation 6. So this was the generalized Couette flow, and again if I have to repeat it for you, so it's very simply combination of the first two cases. Keep this thing in mind, what we have done for laminar flow between parallel plates. हमने क्या किया है? पहली चीज case 1, then case 2, and then case 3, or in other words we have discussed the plane Couette flow plane Poiseuille flow generalized Couette flow and generalized Couette flow. तीन केसेस हमने डिस्कस किए, तीनों अलग अलग जो केसेस थे हमने कंसीडर किए. मैथमेटिकल इक्वेशन को रिड्यूस किया. दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक्स एंड वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको हमने सॉल्व किया. बहुत सिंपली हमने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को रिड्यूस किया इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस एंड फॉर स्टेडी स्टेट फ्लो. उसको रिड्यूस करने के बाद हमने सिंपल एक 2-dimensional फ्लो कंसिडर किया इन विच वी कंसिडर द फ्लूइड इज फ्लोइंग ओनली इन द एक्स डायरेक्शन अलोन. एक्स डायरेक्शन अलोन में फिर उसको रिड्यूस किया. इट came ultimately it came to be an ordinary differential equation, and that too a second order ordinary differential equation, homogeneous in one case and non-homogeneous in the other case. So जब non-homogeneous का case अकर किया, that was for the constant pressure gradient, we solved the Poiseuille flow, and then in case 3 हमने पहले दोनों cases को combine करके we wrote it down and as the generalized Couette flow for this case. अब इसको combine करने के बाद again we saw that how we can reduce the results of the first two cases from the generalized case or from the third case. Again it's very simple thing. जिन students ने पहले इसको solve out किया था जैसा कि I told you in the previous lecture, so it's very good for them. जिन्होंने नहीं किया, I mean now they should be going for it in order to reduce the first two cases from the generalized third case. So this was our first major problem which we solved making use of the Navier-Stokes equations, and you should be very much familiar with it because in the next coming couple of lectures we will go through say the Stokes problem and the boundary layer flow sort of things which are generally related to the applications of fluid mechanics. And with this I'll take you towards today's quote, and it reads that do not be afraid of daring. You know, most of us are always afraid of daring. हम ट्राई करने से और कोशिश करने से और हिम्मत करने से अक्सर डरते रहते हैं because there is always a fear of a failure within us. जब भी हम इस फेल्यूर के डर से, इस नाकामी के डर से, कोशिश करने से कतराते हैं
keep in mind always that we lose the 100% chance of the success. Whenever you try, there is always at least 1% chance that you will succeed, but you lose even that 1% when you don't dare. Don't be afraid. You have lots of potential. You won't even know your potential unless you try. So never be afraid of daring. Live a, say, daring sort of a life where you can go for your dreams. मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को बहुत सी आसानियाँ दे. Till our next lecture, it's Allah Hafiz from my side.